गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। कल हम लोग काइंड पढ़े तो उसके आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। Kinds of the adverb. Kinds of the adverb. फिफ्थ नंबर काइंड है adverb of degree. Adverb of डिग्री लिखेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री indicate adverb of degree indicate the adverbs of degree indicate the degree of intensity of an action or an adjective or an adverb एग्जाम्पल लिखेंगे। सीता इज वेरी हैप्पी। सीता इज वेरी हैप्पी। सीता इज वेरी हैप्पी। इस सेंटेंस में वेरी जो है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सीता इज वेरी हैप्पी इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट है 6 नंबर इंट्रोगेटिव adverb when, where, how, why, how long, how much, how much, how often, how many, addition are called
interrogative adverb when they are used in asking, when they are used in asking, when they are used in asking questions, एग्जाम्पल लिखेंगे वेयर इज मुकुल, वेयर इज मुकुल। इसमें वेयर वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वेयर इज मुकुल। इसमें वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है 7th नंबर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। 7th पॉइंट है एडवर्ब ऑफ रीजन। लिखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, टेल the reason, tell the reason of the action, adverb of reason, tell the adverb of reason, tell the reason of the action, tell the reason of the action। एग्जाम्पल लिखेंगे ही, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे he, therefore, left school। इसमें therefore जो वर्ड है, therefore वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, therefore जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ रीजन है। लिखेंगे नेक्स्ट जो है 8 नंबर, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब relative adverb modify the verbs, modify the verbs following them and
at the same at the same at the same time at the same time join two sentences together. Two sentences together. Sentences together. एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, This is the house. This is the house where he lived. Where he lived. यहाँ पे जो where वर्ड है वो रिलेटिव एडवर्ब है. This is the house where he lived. यह वही घर है जहाँ वह रहता था. लिखेंगे सभी साफ सुंदर राइटिंग में. लिखिए सभी. सभी को इसे फेयर कॉपी में नोट करना है और याद करना है. ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे.